तो आज क्या पढ़ाई करेंगे, दैट इज द इंटरकॉस्टल मसल्स. ठीक है, द इंटरकॉस्टल मसल, दीज आर skeletal muscle fibers, skeletal muscle fiber extending from any bone, muscle fibers extending from any rib bone to its succeeding and preceding ribs. Succeeding and preceding ribs. ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर्स ये क्या है ना, स्केलेटल मसल फाइबर्स, स्केलेटल लाइक स्ट्रक्चर मसल. ठीक है, फाइबर्स here yes, extending from any rib bone to its succeeding and preceding ribs. ठीक है, मतलब फर्स्ट रिब को सेकेंड रिब से जो मसल कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द इंटरकॉस्टल मसल्स. समझ में आ रहा है. ठीक है, व्हाइल जॉइनिंग द एडजेसेंट रिब्स द मसल एक्सटेंड इनटू टू डायरेक्शंस. सो दिस मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल intercostal muscles and internal is intercostal muscles. External, these are extended forwards and downwards. Okay, forwards and downwards. Forward and downwards, arising from proximal lower border of the ribs able to the distal upper border of the ribs. ठीक है, proximal lower border of the ribs to the distal upper border of the ribs, border of the ribs below. The ribs and sternum are raised upward and downwards, outwards. The ribs and sternum are raised upward and outwards by the contraction of these muscles, by the contraction. ठीक है, समझ में आ रहा है. ये क्या है ना, जो इंटरकॉस्टल मसल से वो क्या करता है ना, रिब बोन्स टू द सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग रिब्स को जॉइन करता है. और टू टाइप से अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स. इट मे बी एक्सटर्नल intercostal muscles and external intercostal muscles. External intercostal muscle क्या होता है ना, these are extended forward and downwards, आगे और पीछे.
forwards and downwards, proximal lower border of the ribs to the distal upper border of the ribs below. ठीक है, तो ये क्या करता है, कौन सा के लिए हेल्प करता है, दैट इज द कंट्रैक्शन. ठीक है, the contraction of the muscle thereby increasing the space of thoracic, help in increase the space of the thoracic cavity. ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या है ना, दिस मसल टेक मेजर रोल इन नॉर्मल ब्रीदिंग. इट टेक्स मेजर रोल in normal breathing. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, समझ में आ रहा है. Second one is internal intercostal muscles. Internal intercostal मसल्स. तो क्या होता है ना, दीज आर स्केलेटल मसल्स. ये क्या है, स्केलेटल मसल्स है, एक्सटेंडिंग बिटवीन backwards and downwards from distal lower border of the ribs, from distal lower border of the ribs above to the upper border of the rib bone, above to the upper border of the rib bone. Rib bone. These are two types of muscles cross each other almost at right angles. During their contraction, the ribs are dragged downward and inward. Ribs are dragged downward and
inward, thereby reducing the volume of the thoracic cavity. Volume of the thoracic cavity. This muscle take part in during forceful expiration. Forceful expiration. तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, वो क्या करता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity. बट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो दिस मसल्स मेनली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सफुल एक्सपीरेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम है. ठीक है. देखो ये वाला, देखो ये वाला रीप से दिखाई दे रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये वाला रीप से, ये वाला भी रीप से, समझ में आ रहा है? ये वाला क्या है, दिस वन इज, ये वाला देखो डायफ्रागम है, डम शेप्ड. समझ में आ रहा है? ये वाला भी डायफ्रागम है. ये क्या है, इन्हें रीप से, समझ में आ रहा है? हाँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. देखो कैसे, ये वाला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कैसे ज्वाइन होता है. देखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, देखो ये वाला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, ये वाला thoracic कैविटी है. जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है ना, वो जब स्ट्रेचिंग होता है ऐसे, तो एरिप्स इधर आता है, थोड़ा सा thoracic कैविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है. लेकिन जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, तो वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है वॉल्यूम. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला स्टर्नम है, स्पेस एडेड बाय लोअरिंग ऑफ रिब्स. ठीक है. यहाँ पे है. अभी वो स्ट्रेचिंग होने के बाद क्या होता है, स्पेस एडेड बाय लोअरिंग ऑफ रिब्स, तो स्पेस इंक्रीज होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक मसल से जो रेस्पिरेशन को हेल्प करता है, दैट इज एब्डोमिनल मसल्स. These are considered as accessory muscles of respiration which contract violently during forced expiration. ठीक है, जब forcefully expiration ड्यूरिंग फोर्सफुली एक्सपीरेशन क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट वायोलेंटली. एब्डोमिनल जो मसल है, कॉन्ट्रैक्ट वायोलेंट. Their contraction presses the abdominal viscera against diaphragm to bulge it more upwardly for expiration. But the relaxation allows compression of abdominal organs when diaphragm straightens. ठीक है, the contraction during contraction
Action of the abdominal muscles, the abdominal viscera, against diaphragm. It presses the abdominal viscera against diaphragm to bulge it more awkwardly for expiration. Awkwardly for expiration. But the relaxation allowed during relaxation allowed compression of abdominal organs, compression abdominal organs when diaphragm straightens. Diaphragm to bulge it more awkwardly for expiration. Life